Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by FinLearn Academy. So in this video we are going to see कि इस वीक में मार्केट का रुझान क्या रहा हुआ है, आने वाले वीक में मार्केट के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं. वी विल अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम द डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव. उसके बाद में सेक्टर स्पेसिफिक किसकी क्या मोमेंटम रही हुई है एंड द मेन स्टफ द स्टॉक ऑफ द वीक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल दर्ज किया हुआ है ऑलमोस्ट 18,900 के यहाँ पे, दैट इज ऑन द 1 दिसंबर. लेकिन उस डेट के बाद में वी हैव बीन सीइंग द सेलिंग प्रेशर, जिस ट्रेडिंग प्रेशर को ऑलमोस्ट 7 दिन हो गए हैं. हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वहां पे वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी ने 1% की डिक्लाइनिंग मोमेंटम रजिस्टर की हुई है. कैंडलस्टिक को कंबाइन करते हैं तो ये कैंडल पैटर्न को हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कह सकते हैं. बट विथ माई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बेरिश रिवर्सल कैंडल का होना कुछ ज्यादा इंपैक्ट या फिर मीनिंगफुल नहीं है, बिकॉज बेरिश रिवर्सल कैंडल के मोर इम्प्लीकेशन जब भी नेगेटिव ट्रेंड में होता है तभी ज्यादा होता है. बट एज ऑफ नाउ वी आर इनटू द पॉजिटिव स्ट्रक्चर और ऑल टाइम हाई पे हैं, तो वीकली चार्ट्स डेली चार्ट्स की बेरिश रिवर्सल कैंडल इतनी ज्यादा मायने रखते नहीं है. लुकिंग एट द टेक्निकल डेवलपमेंट्स ऑफ इट के निफ्टी ने के ये 7 दिन की डिक्लाइनिंग मोमेंटम दी हुई है, सो इट हैज कम डाउन टू द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. सो दैट इज व्हाट लास्ट टाइम बेस दैट वी हैव सीन, जहां पे प्राइसेस ने थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लिए हुए थे कुछ दिन के लिए. नाउ दैट रेजिस्टेंस इज ब्रोकन आउट एंड प्राइसेस ने यहाँ पे आज के दिन पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा एक बाउंस हमें देखने मिला होता, नॉट मीनिंगफुल बाउंस बट एक स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे एक देखने मिली थी. सो इन अ वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव 18,400 लेवल इज द इमीडिएट सपोर्ट लेवल. एंड ऑन द हायर साइड निफ्टी काफी दिनों से 18,660 के लेवल के अराउंड पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है. सो इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव 18,430 एक सपोर्ट लेवल बनता है एंड ऊपर में 18,664 एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हम इसको मान सकते हैं. प्राइसेस का नीचे में डिक्लाइन करना, लेट्स से सपोर्ट का ब्रीच करना 18,400 के यहाँ पे, सो इट कैन हैव द नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल नियर अबाउट बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल, जो 18,200 से लेके 18,115 के लेवल बनते हैं. बट दीज आर ऑल द शॉर्ट टर्म लेवल्स दैट वी आर सीइंग. मार्केट का फ्रॉम अ मिड टर्म परस्पेक्टिव इफ वी से तो 18,100 लेवल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इट. So why the 18,100 level? Because if I consider the important turning points around this particular level, so this is comes at an 18,100 level, जहाँ पे मार्केट के काफी सारे रिवर्सल्स पॉइंट्स हमें देखने मिले हुए हैं. सो जब तक ये इनिशियल बेस सस्टेन करता है, सो फ्रॉम मिड टर्म परस्पेक्टिव द थिंग्स आर फाइन. फ्रॉम द शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव ऑल्सो द निफ्टी हैज टेकन अ सपोर्ट, लेकिन इस पॉजिटिविटी को कंफर्म करने के लिए वंस द निफ्टी इज मूविंग अबाउट द 18,600 लेवल, सो दैट इज अ गुड थिंग. Secondly, from the seasonality perspective, if we see निफ्टी का दिसंबर महीना नॉर्मली दैट इज इन फेवरेबल फॉर द निफ्टी. सो वी हैव ट्रैक्ड द डेटा फॉर ऑलमोस्ट 25-26 years wherein we have identified that कि December month is the one of the month where we have seen the highest positive closings. तो इस पर्टिकुलर मंथ में निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी अच्छा है एंड व्हेन देयर इज अ सपोर्ट लेवल और वहां से कुछ बाउंस हमें देखने मिलते हैं, सो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द बाय. सो अंडरलाइंग टोन रिमेंस इन बाय. शॉर्ट टर्म में 18,400 के लेवल के नीचे ब्रिज हमें देखने मिलते हैं, सो इट कैन बी एट एन नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल नियर अबाउट 18,200 और 18,100 लेवल. बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर विल रिमेन पॉजिटिव एज फार एज अबाउट द 18,100 लेवल और 18,600 के ऊपर ब्रेकआउट फॉलोड बाय द 18,900 एंड सो फोर्थ. So this is what the technical view for the market. Underlying tone remains a positive. We will see next on the derivative perspective as well. Looking at a derivative perspective, so this week has been closed around the 18,500 level. So this is an 18,500 as our at the money strike price. Now, looking at a call side where the highest base is getting built up, so here we can see that 18,600 is a strike price where it is having the open interest near about by 2,70,000. So it is in a highest call base that we are looking at this. So it indicates that it is an important resistance level right now. And along with an open interest, the highest amount of the change in OI also, that is around 1,47,000, which is forms the 50% of the OI. So huge amount of the OI base as well as the OI change is happening. So that is what it is on 600 level considered as an important resistance level where there is a short buildup has been observed. Now on the put option side,
18,500 level, it is having the highest open interest is near about by 18,600 level. Prices has moved below this particular point, indicating certain kind of weakness, 18,500 level, and followed by 18,200 level. So these are the ladders of the support level. But 18,600 level, it has also witnessed a long build up, whereas the highest amount of the OI that has been changed, but the change in OI is very much less right now. The change into the OI is happening near about by 18,400 level kind of things. So prices has moved below the 18,600 level. But majorly if we see that 18,600 level, the highest call base and highest put base lies over there. And from the overall call base and put base perspective, we can see the activity in call base has been jumped around by 120%, whereas put options activity has jumped around by the 52%. So activity in a call side is very much high. This get more clear when we look at PCR, so that is our put call ratio, which is coming at 0.52 level kind of thing. However, PCR's interpretation is quite different from the contrary perspective and from the momentum perspective. But technically, one thing that we can derive right now is that 18,600 level, where the short buildup has happened on the call side, long buildup has happened on the put side, the highest amount of the base and a change in activity on the call side is happening around this level. So this is stiff resistance level. And from the technical perspective also, as we have seen into the previous point, that 18,600, 650, technically there is what a resistance level. Today the market, on the Friday, the market has picked up its momentum. It has made the high at around 18,600 level. So this is going to be the stiff resistance. The fresh upside momentum is above the 18,600 level, we can say. Looking at a sector specific movement, this weekend Nifty was down by the 1%, but if you look at the price performance, the Nifty PSU is almost up by of near to 5%, followed by the Nifty FMCG sectors, Bank Nifty, private MNC sectors. In सभी sectors ने काफी अच्छा perform किया हुआ है. However, means the private banking, so they have ended on the positive note, so can be considered as an outperforming sectors. And on the lower side, if we see the Nifty, IT, realty, energy, pharma, media, auto, ये सारे stocks weakness दर्ज कर रहे हैं. Now about these stocks sectors, auto, media, pharma, energy. So let's say कि market में selling pressure सिर्फ 7 दिनों से ही आ रहा है, but these particular sectors are shedding their strength before than that. Okay, काफी टाइम से उनके selling pressure है. So there is a kind of nervous stocks, even in the case of the Nifty reality as well. Nifty IT sectors, what happened is that it has the consolidation patch for 29 weeks. 29 weeks के बाद में इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने मिला था, बट दैट ब्रेकआउट वाज नॉट दैट मच सस्टेन्ड और तुरंत से इंडेक्स नीचे आ गया था. On a Friday, there was a very strong selling pressure that has happened on a single day. Now, but with this declining momentum, of course, structure इसका weak ही है, but it is near to in a support band right now. So we need to just figure out कि थोड़ा सा retracement हो और उसके बाद में हमें कुछ bearish continuation sign मिले, just to have the better risk reward ratio perspective. But this is what the sector perspective is all about. Strategic index में देखते हैं तो निफ्टी 50, that is in large cap, fallen by the 1%. So in the same line, the Nifty small cap has also fallen. लेकिन mid cap के space से देखते हैं, so they have also fall, but they have fallen by the 0.6% kind of thing. So they are showing certain kind of the outperformance. There were a time couple of weeks back जहाँ पे large caps were dominating, but from past 2 to 3 weeks we have started to see that कि जो next 50 के counters हैं, जो mid cap के counter हैं, so this particular universe has started to do well. So in the next week we can have an eye on this particular performing sectors, and from the mid cap and the next 50 categories, these are the flavor of the market right now. So looking at in the last point of the video, that is in a stock of the week. So stock of the week में discuss करने से पहले we have seen that के FMCG stock is doing well from the sector analysis perspective. तो FMCG sectors में आपके beverages companies में आ जाते हैं, and in beverages specifically we are seeing that a good momentum is happening across the UBL. UBL का already एक breakout आ चुका है. McDowell is on the edge of the breakout, और Radico केदार में भी कुछ एक positive bullish continuation sign हमने देखने मिल रही है. And on the lighter note, this is what December month, that is on year end month. So of course these stocks are likely to do well. Their sales are likely to do well. This is on the lighter note, but technically yes, it is looking well.
Then what we have seen is that technically prices has fallen down a lot, it has moved up, overall structure is quite good, it has been into the bullish structure. This is what your corrective declining momentum, prices has picked up its momentum, again there is a declining momentum happened. So this major declining momentum that we have seen that has lasted for a couple of weeks. So if I just put the horizontal line at the low of it, so I can understand that last times kuch turning points it has happened to be around this level. It has formed the hammer pattern, and after the hammer pattern the bullish engulfing pattern, and we have started to see the very strong upside momentum right now. On the daily chart what happened is that couple of days back it has formed the strong expanded range candle. Now this all expanded range candle all the way it has retraced down, and prices के जो lower band था वहाँ पे आके we have started to see a certain kind of the positive candle, the bullish candle that has started to form. तो ये कुछ एक positivity indicate करती है. So basically this stock at the current market price looks good. इसका stop loss will become below this particular expanded range candle's low point, that is in 1055 level that we can consider. That is what our stop loss point we can say. And on the higher side for the next week if we see, so the immediate hurdle level that is having is an all time high level kind of. ये भी आपका एक immediate level हो सकता है. That is the first resistance level that we can say, and this is what the second best resistance level that we can see. After doing so, we need to look at the ratio, means risk reward ratio is what. So here we have the calculator like long risk reward ratio as we are having the positive view. So let's say at the current market price we are looking for the opportunity. This is what my lower point where we can place the stop loss, and this is what my first high point, and this is what my second high point, but taking the retracement around this particular point. So this is what the configuration comes in. Okay, 30-point risk is that, and the immediate hurdle level that we have, that is near about by 1200 level, which is good risk reward ratio that we are having, 1220 level kind of thing. So this is the risk reward ratio is that from the positional perspective in this particular range we can accumulate from this particular level to the stop loss level. This particular view is from the very short term trading perspective. अगर risk appetite ज़्यादा होती है, so स्ट्रक्चर वाइज इट इज फाइन, और आपका दिस इज व्हाट योर एक्यूमुलेशन फेज कम्स इन, और ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है 1015 का. एंड ऑन द हायर स्केल द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल दैट यू हैव अराउंड द 1230 और 1280 लेवल अराउंड. ऑफ कोर्स इट मे हैव द रेजिस्टेंस नियर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन जो पॉजिटिव स्टॉक होते हैं, पॉजिटिव काउंटर्स होते हैं, द रेजिस्टेंस आर कंपैरेटिवली वीकर वन. तो अगर मैं यहाँ पे भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शेयर करता हूँ, तो लेट्स से टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट, ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस आ जाता है, एंड दिस इज व्हाट माय हाईएस्ट टारगेट पॉइंट इज कम्स इन. देन आल्सो द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम्स नियर अबाउट बाय 3 एज वेल. देन माय स्टाइल इज एक्यूमुलेट, कि थोड़ा सा ज्यादा स्टॉप लॉस रखो एंड स्टॉक को एक्यूमुलेट करो. सो आई विल गो विद इन अ लेटर अप्रोच. सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो जो भी कुछ हमने मार्केट में इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है रिगार्डिंग द मार्केट एंड स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक पर्पसेस, दैट इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस. स्टे ट्यून एंड stay joined to get a more updated and informed videos. Thank you so much.